say we have 2, 3, 4, 9, 1, 3, 0, 2, 1, 3, minus 1, 6, and the right hand sides are, let's say 4, 9, 2. Let's say these are right hand sides. Okay? Clear? And the linear system will be, let's say the linear system is like this: x1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, x4, that is equal to that. Let's say this is the linear system you want to solve. Given in these equations. Okay? I will just focus on algebra rather than geometry, charting, hyperplanes, and I will not focus right now on geometry, but just on algebra, how to solve, how to find the value of x1, x2, x3, and x4 that solve all, that satisfy all these three equations simultaneously at once. 4 by 2. Sorry? 4 by 2. Just some values. I've just assumed some numbers. Let's say these are three equations how to solve. Clear? एक चीज है मैं रखिएगा, अगर मैं किसी भी इक्वेशन को इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए किसी भी इक्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर से स्केल करूं, फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूं, as long as I multiply this equation with 5 on both sides of the equation, I'm not changing the equation, I'm not changing the construct. So scaling any row, scaling any equation completely by a non-zero number does not change the solution of the system, because that does not change the constraint. Clear? So we can safely scale any equation completely, right hand side as well as left hand side, and the system, the solution stays the same. We can swap any two rows. I mean, that's trivial. If I write this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3, who assigns those numbers? Let's write this at the first and write this at the third one. You can swap any two and that doesn't change the solution. The third is interesting. Scaling doesn't change the solution, and swapping doesn't change the solution. A third operation is interesting. For example, just considering 2D that I have an equation 2x plus y is equal to 7, and I have another equation 3x plus 4y is equal to 8. This is first equation. This is second equation. Okay? Now see, if we have 2x plus y equals to 9 equals to 7, if I add, this equation is there. If I add 8 here and 8 here, the equation doesn't change. Yes, no? Yes. I mean, this is the same equation as the first one. Yes. Which means I have not changed the equation in a way that the solution should change. Solution of the system should not change. Yes. Yes? If you see this 8 and you see this equation, this is 8. Okay? Yes, no? Yes. That means I have added 8 both sides, and so the solution should not change. So adding two equations together does not change the solution. Yes? Yes. Now see, if I scale this row, then I add to this, and then I rescale back, solution does not change. You understand? Yes, sir. मैं जिस किसी इक्वेशन को जितनी दफ़ा मर्जी स्केल करूँ, as long as the scalar is non-zero, मैं किसी भी इक्वेशन को उठाऊँ, किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड कर दूँ, जिस मैं ऐड करूँगा वो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, it looks like ये चेंज हो गई है, that doesn't change the solution. Yes. Make sense? Yes. Now the question is, when these operations do preserve the solution, why do we, I mean, what are the benefits of these operations? Well, these operations preserve the solution. That's a very important property. We can apply these operations and simplify our simplify the process of finding out the solution. Because these operations, they preserve the solution, we can apply these operations repeatedly, and we can make the system in a form that is easy to solve. And that easy to solve system and the original system, they both have same solution.
because operation I have applied, those operations, they are solution preserving. Yes. And these operations technically are called elementary row operations. Clear? Yes, no. So that's it. If I write this metric, system in another form, and the right hand side at the very last value 1 3 0 2 9, then 1 3 minus 1 6 and 2, then I can scale any row. I can add one row to another, and not only that, I can scale a row, I can add the scaled row to another row, and then I scale it back. It looks like I can add a scalar multiple of one row to another one. और ये स्केलर मल्टीपल जब ऐड करते हैं आप करें सिर्फ ये कि आप एक रो की कॉपी उठाएं, उस कॉपी को स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड कर दें और ओरिजिनल को वही लें. Make sense? So you can scale a row, you can swap two rows, you can add a scalar multiple of one row to another row, and the solution will not change. Yes, no? Yes. Okay, great. So let's start our journey of solutions. First of all, if I swap the first row and the second row, the solution doesn't change. Same? So let me swap. I know this is boring, but just bear it with me for once. See? I can do that. Now, this system and this system, they have same solution. Now, I can multiply the first row with -2 and add in the second row. That will result in eliminating this value. Yes, whatever the rest of the values. So, help me. What will be this value now? After you multiply this with, so take the copy of the first row, multiply with -2 and add here. You'll get this 0. -2 से multiply करेंगे -6, so this is -3. What is this? -4. This is -4. No, this is 4. This is 4. What is this? 5. -3 से multiply करना. -2 से. So this is 5. What is this? -14. Okay. Now I can eliminate this one. I will multiply this with -1 and add here. Get 0 here, 0 here, -1 here, 4 here, -7. -1. Yes, no. और ये ऐसे -2 करेंगे. यहाँ पे तो मैंने गलत लिख दिया. Anyways, when the calculation mistake very easy. This is the form now. Technically, this is called row echelon form. So again, now I will not go into the details in what form a matrix should be to be called in a row echelon form, but technically this is the row echelon form. So again, now you can write, by the way, this system and your original system, they have same solution. Because the three operations we deploy, they never change the solution. Yes. But finding out the solution using this system is easy. Let's see, for example, rewrite the equations back. The first equation is x1 plus 3x2 plus 2x4 is equal to 9. Second equation is minus 3x2 plus 4x3 plus 5x4 is equal to minus 14. And then we have minus x3 plus 4x4 is equal to minus 7. Now see one process. In the very first equation, if somebody gives me, for example, इसको मैं 0 की बजाय कुछ और कर देता हूँ, let's say final solution and this is 4 let's say, just to 4x cube plus 2x4 is equal to 9.
Let's say that's the result. अगर आप पहली इक्वेशन को और से देखें ना, then to lock a value for x1, you need the values of x2, x3, and x4. If somebody specifies the value of x4 to be some value, the value of x2 to be the some value, x3, then x1 is restricted. Then x1 is bound to take a particular value. Yes, no? Yes. Okay. Same way, if you see in this equation, if somebody specifies x4 and x3, then x2 is restricted, locked. Yes. Similarly, if somebody specifies x4 here, then x3 is locked. Clear? Yes. Consider there is one more equation in the system. Consider one more equation was there in the system, and the system was 0, 0, 0, 3 is equal to 4, let's say. And there is, let's say, another equation, which means 3x4 is equal to 4. Now this is the perfect flow. Find out x4 from here, supply there, x4 will log x3, supply both x4 and x3 there, x2 will be logged, supply x2, x3, x4 there, and x1 will be logged. Yes. And that's a typical situation of having unique solution. One solution of the linear system. Clear? और यहाँ पे मैं कुछ और चीजें भी आपको बताना चाहूँगा. In Riemann form, the first non-zero entry from left to right is called pivot, and the number of pivots of a matrix is called rank of the matrix. So in this case, the rank is 4. When you have 4 variables and the rank is 4, then you will be having unique solution. Make sense? Yes, no? Yes. Okay. Now, in our case, this fourth row doesn't exist. In our case, nobody is going to give us the value of x4. That means is the following. If x4 is equal to 2, then according to x4, x3 will be having some value, x2 will be having some value, x1 will be having some value depending upon what is the value of x4. If x4 is 20, then x3, x2, x1 will take values with respect to. Make sense? If you restrict x4, then the rest of the values are restricted accordingly. But here nobody is going to restrict x4. x4 has to stay free. Yes. Make sense? And this means I will take x4 as a number t. T can be any number. Now x3 will be -7 -4 t. और ये माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये this thing, this is now x3. Now plug in x3 and x4 in this equation and you will get x2 in terms of t. ये वो जो x2 की वैल्यू आएगी वो आएगी a plus bt इस फॉर्म में आ जाएगी. Yes, a की कोई वैल्यू आएगी, b की वैल्यू. इसी तरह अगर ये तीनों वैल्यूज आप ऊपर प्लग इन कर देंगे तो x1 will become c plus bt. इस तरह की वैल्यू आ जाएगी. Yes. Yes, no? Yes. और जो सोल्यूशन आएगा वो इस तरह से आएगा. C plus dt, A plus bt, 7 plus 4t, and t. That's the solution. और इसी को मैं लिख सकता हूँ C A70 plus t times DB41. For every choice of t, there is a solution. For another choice of t, there is a solution, and so on. And we say it has infinitely many solutions. Yes, no? Yes. एक चीज ध्यान में रखिएगा, every pivot locks a variable. You have 4 variables here, only 3 pivots. With 3 equations, you cannot have more than 3 pivots. If you have 4 variables, 3 equations, you end up restricting at max 3 variables. Yes. One has to stay free. And that one's free variable makes the infinity many solutions. Make sense? Yes, no? Okay, so with the same procedure, with the same, yes? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे सेंटर्स एक से ज़्यादा नहीं है, मल्टीपल हो सकते हैं? Yes.
अभी मैं उनको डिस्क्राइब करूँगा फर्क क्या है. Center actually, if C is a center, then lambda C is also a center Oh. because it is homogeneous. अच्छा. So there has to be infinite. There are infinity many representation of a point in homogeneous form that will give me infinite solution at the end of the day. Oh no. Okay. Is that okay? Yes. Yes, no. Yes. यानी मैंने आपके लिए तीन years set Yes, किए. yes. ठीक है? Is that okay? अब अगर आप राइट हैंड साइड पे 0 0 0 लगा देंगे तो आपको इन एंट्रीज को चेंजने की जरूरत नहीं है, हमेशा जीरोस रहेंगे और आखिर में आपको सॉल्यूशन निकालना है. सही है? लेकिन एक चीज जो जरूरी है वो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर दूँ. ये मैं इरेज कर दूँ. इरेज कर दूँ. This point x1 x2 भी 0 0 भी 0 0 इक्वल आएंगे. yes ये I mean 0 0 0 it's a trivial solution of this system. मैं इस homogeneous system को बताता हूँ, इसको explain करता हूँ. 0 0 0 is not the solution we are after. We know that the center is not 0 0 0. It's somewhere else. So actually we want to find out a solution where all these components are not 0. Make sense? So एक और चीज देखिएगा, अगर मेरे पास वो PC equals to 0, सही है? और मेरे पास यानी इसको C को अगर मैं x की फॉर्म में लिखूं और P को A की फॉर्म में लिखूं तो this is this system AX is equal to 0. इस सिस्टम का सॉल्यूशन 0 वेक्टर तो हमेशा ही है. यानी अगर मैं राइट हैंड साइड पे 0 लिख दूं और आपसे कहूं कि मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दो तो कुछ मसला नहीं, हम सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 दे दें, ऑल इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड. Yes. दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन. जब आपसे कहा जाता है ये सिस्टम सॉल्व करें, यू आर नॉट आफ्टर ट्रिवियल सॉल्यूशन, यू आर आफ्टर अ सॉल्यूशन वेयर ऑल वेरिएबल्स आर नॉट 0. दैट्स द क्वेश्चन. होमोजेनियस लीनियर सिस्टम का 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा ही होता है. जब क्वेश्चन पूछा जाए या जब आपसे कहा जाए हाउ टू फाइंड आउट द कैमरा मैट्रिक्स, that doesn't mean you come up with all zeros and say this is because this satisfies the equation. That is trivially there. समझ आ रही? We need other session. Yes, no? Yes. दूसरी चीज से और से देखिएगा, ax is equal to 0. If x satisfies, if x is the solution of the system, so is tx. If ax is equal to 0 and t is some number, then atx is equal to tax, and that is again 0. That means a times tx is also 0. If x is the solution of the system, Then TX. then tx also. That means if there is a non-zero vector, if there exists a vector with not all the zeros in, with not all zero entries, if there exists a single such vector, then every scalar multiple of it is also the solution vector. समझ आ रही? मेरी बात समझ आ रही? Yes, no? Yes. अगर कोई एक वेक्टर ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है A. मैं एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो 0 पे मैप कर दे, जो ये मैट्रिक्स उसको 0 पे मैप कर दे. I want a non-zero vector here such that the result is 0 0. So this is this, for example. Yes. ये मैंने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया पहले. This vector will map to 0. Once this vector maps to 0, every scalar multiple of it also maps to 0. सेंटर ऑफ कैपिटल तो एक नहीं होगा. मैं इस पे आता हूँ. नहीं सवाल है. Yes. कैसे ये कहते हैं सेंटर तो एक होगा, एक पॉइंट होगा, तो आप इतने सारे क्यों लेके आ रहे हैं? So अब आंसर है. Just hold on.
ये ध्यान रखें, if ax is equal to 0 has one non-zero solution, then it has infinitely many solutions. And those infinitely many solutions, they form a vector space. They form a space called null space of matrix A. अच्छा समझ आ रही है? किसी भी मैट्रिक्स की नल स्पेस क्या होती है? वो तमाम वेक्टर्स जो जीरो पे मैप हो जाएं, उन तमाम वेक्टर्स के सेट को कहते हैं नल स्पेस होती है. Yes? I mean this is that simple. Why it is null space? Because the matrix map everything to null vector. समझ आ रही? Make sense? Yes. So when we will solve this equation, because we have only 3 rows and we have 4 variables. समझ आ रही? 3 variables will end up locking three pivots will end up locking 3 variables. One variable has to stay free, and we will be having infinitely many solutions. But all these solutions, they are scalar multiple of each other. All these solutions, they are scalar multiple of each other. Why? First of all, see, let's say x1, x2, x3, x4 is a solution. Let's say this is a solution. समझ आ रही? Let's say this is a solution. This is also a solution. Let's say p times this and p times this both is 0. So this is also a solution, this is also a solution. समझ आ रही? ठीक है. That means p times this plus that is also a solution. Yes, no? Yes. That means p times this plus t times that is also a solution. परिभाषा में क्या है? So all the solutions, they are actually scalar multiple of each other. All the solutions, they are scalar multiple of each other. There are infinitely many solutions, but the solutions are not just arbitrarily, randomly wandering around. So you pick one vector, you pick another vector, they are parallel, they are scalar multiple of each other. You pick any two of them, they are scalar multiple of each other. And you know homogeneous, all of them, they collapse to one point, that is camera center. Because this is homogeneous, everything is homogeneous. जब आप एक point लेते हैं, उसकी homogeneous representation करते हैं, you have infinitely many interpretation. This is exactly that. मेरी बात समझ में आ रही? In contrast, if you have a solution, for example, ax is equal to b, where right hand side is non-zero, such a linear system will be having solution like this. Yes. ये solution होगा कुछ इस तरह का. 2, 3, 4, 7, let's say, plus t times 1, 2, minus 1, 3, let's say. In this case, if you plug in a particular value of t here, let's say t is equal to 1, you will get a solution. Now plug in another value of t, let's say t is equal to 2, you will get another solution. These two solutions, they will not be scalar multiple of each other. अच्छा. समझ आ रही है? एग्जाम्पल करके देख लेते हैं. और यहाँ पे मैं आपको एक क्रिटिकल सी चीज बताना चाहूँगा इंशाल्लाह कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस, कि उसके सारे वेक्टर्स दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. ऐसा सेट जिसमें इन्फिनिट वेक्टर्स हों, लेकिन उसमें कोई से पेयर ऐसा एग्जिस्ट करे जो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल ना हो, उस सेट को वेक्टर स्पेस नहीं कह सकते. अच्छा. समझ आ रही है? Just hold on for a moment. In this case, if you pick a value of t, for example, pick a value of t is equal to 1, what is the point? 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 4 minus 1, 3, 7 plus 3, 10. Now pick a value of t as 2. That is also solution of this system. Huh? For every value of t, there is a solution. There are infinitely many solutions. But let's see the solutions. Okay? Now, if you pick the value of t as 2, you will get 4, 7, 2, 13. And these two are not scalar multiple of each other. Yes. लेकिन अगर मैं ये माइनस कर दूं,
ये राइट वाली लेफ्ट वाली चीज़, ये तो फिर ये मल्टीपल हो जाएंगे, नहीं नहीं तब भी नहीं होंगे। नहीं, नहीं, कर लेंगे। सीरियसली यस नहीं, डू इट। नहीं है। मुझे 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 असल में इंटरनली पता है कि क्यों नहीं होंगे, अच्छा, बिकॉज इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होती है? इट इज अ सेट कंटेन दैट कंटेन्स ओरिजिन प्लस ऑफ दिस इज वन प्रॉपर्टी। ओह, चूंकि इसमें ओरिजिन नहीं है, लिहाजा ये वेक्टर स्पेस नहीं है। चूंकि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, देयर एग्जिस्ट अ पेयर जो आपस में पैरेलल नहीं। These are proper theorems and all that stuff. So no matter what you do, I mean, I can come up with a pair that so that हाँ, okay. Unless and until के ये और ये जो दोनों आपने लिखे हैं ये आपस में पहले से स्केलर मल्टीपल हो, तो फिर आप उसको स्क्वीज कर सकते हैं। In that case, the solution can be written as 0, 0, 0 plus that. सही। जी मैं बताना ये चाह रहा था कि ये भी इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं। अगर आप t की को डिफरेंट वैल्यूज लें दो, तो ये जो दो पॉइंट्स आएंगे दे आर नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, व्हिच मींस दे डू नॉट रिप्रेजेंट, दे आर नॉट द होमोजेनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन पॉइंट। समझ आ रही? जब आप कहते हैं PC is equal to 0, it gives you solution in a form that all the points that are infinite, they are homogeneous representations of one point, and that point is camera center. The last one, Yami? Yes, no. Was that hard or is that okay? थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका एक सोल्यूशन है 0, 0, 0। इसका कोई और सोल्यूशन जो आप निकालते हैं वो निकाल रहे हैं। तो मैं सोल्यूशन को चूंकि P0 is equal to 0, this 0 is a 0 vector, and P, let's say this is the solution, that's a C. C is the solution, this is also 0. That means P0 plus C is also a solution. I mean this vector also satisfies this equation. Yes? Okay, that means P0 plus TC is also a solution. इसका मतलब है कि इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे ना वो इस फॉर्म में होंगे, और इसको अगर आप गौर से देखें दे आर ऑल स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। जबकि अगर मेरे पास सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखा होता कि यहाँ पे 0 के अलावा कुछ होता, तो मैं t की एक वैल्यू लूँ, t की दूसरी वैल्यू लूँ, जो दो पॉइंट्स आए थे वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स नहीं हैं। अगर सारे पॉइंट्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स होंगे तो दे आर ऑल होमोजेनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन पॉइंट। मैं सब की नॉन होमोजेनियस बना दूँ, आई विल गेट टू वन पॉइंट। यस, In that case, I will not. समझ आ रही? और यहाँ पे बिल्कुल justified है। PC equals to 0, give you infinity many solutions, but do not get discouraged. Pick any solution. ना उसको homogenized Pick कर, any value of t. Pick any value of t and non-homogeneous you get your centers. वो अच्छा आ गया। You need not find for what t, what t, what t. बराबर। Make sense? Yes, no? Is that okay? Should I move on? एक सबसे ये बता दें कि इसमें नॉन इक्वल इसमें दो वेक्टर थे, वो किस केस में देंगे? जैसे लोग हैं कि कोई स्केलर प्रोडक्ट है वो एट में एक ही पॉइंट देगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस तरह का लीनियर सिस्टम होगा ना, इस तरह का लीनियर सिस्टम होगा जिसमें राइट हैंड साइड सारी जीरो नहीं होगी, उसका जो रिजल्ट आता है ना, उसके जो रिजल्ट के मुख्तलिफ पॉइंट्स आएंगे टी की हर वो आपस में स्केलर मल्टीपल एक दूसरे में होना जरूरी नहीं है। जबकि अगर राइट हैंड साइड पर जीरो होगी तो जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो सारे एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स होंगे, और ये जो सारे सॉल्यूशंस होते हैं ना, इस सॉल्यूशंस के सेट को कहते हैं नल स्पेस। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नल। सो आप P की नल स्पेस फाइंड आउट कर लें। अब सवाल तो ये होना चाहिए ना, मैं आपके पास एक मैट्रिक्स लेके आया हूँ, उसका मैंने सेंटर निकालना है, और आप मुझे कह रहे हैं इसकी नल स्पेस फाइंड आउट करें। मैंने तो एक पॉइंट फाइंड आउट करना था, आप मुझे कह रहे हैं पूरी स्पेस निकाल लें। At the end of the day, if you had a whole space, it represents one point. So null space find out करिए, matter की between one and null, it will give you one vector from the space, and you just non-homogenize that vector. You are done.
मेक सेंस? और अगर आप मैटलैब यूज नहीं करना चाहते, जस्ट सॉल्व द सिस्टम यूजिंग रो एक्लन फॉर्म। और जब टी की फॉर्म में रिजल्ट आए तो टी की कोई एक वैल्यू प्लग इन कर दें, यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन नॉन होमोजेनाइज इज देयर इन द सेंटर। मेक सेंस? So now given camera matrix P, you can find out its center. Yes, no? आगे चलिए। So you know minus x4. This T, no, this T is not x4. This T is not x4. No. जब आप solution को लिखेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। x4 की कोई वैल्यू होगी, x3 की कोई वैल्यू होगी, x2 की कोई वैल्यू होगी, x1 की कोई वैल्यू होगी। यहाँ पे हो सकता है वैल्यू 1 आ जाएगा, आपने x4 को T अज्यूम किया है, ये T बचा है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। अब T की वैल्यू 10 लेते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा। Yes, no? नहीं? Thanks. यहाँ पर फिर D कैसे है? नहीं, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, इस केस में गालिबन आप x4 को T अज्यूम करेंगे। और T assume करेंगे तो ये हमारा x4 होगा। जी, लेकिन बाकी सारी T की टर्म्स में आएंगे यहाँ पे। हाँ x4 को जब T की फॉर्म में आप प्लग इन करेंगे पिछली इक्वेशन में, तो x3 भी T की टर्म्स में आएगा। बाकी तो तीनों वेरिएबल्स T की टर्म T की टर्म्स में आएगा, तो मैं T को सेक्शन आउट करूँगा, तो T आउट हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट्स आ जाएंगे। उस केस में x4 भी अलग बताना आएगा, बाकी ये कुछ वैल्यू होगा। Yes, no? So far so good? Yes. यानी कहते हैं ये सॉल्व करें, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Oh, it will take a lot of time. अच्छा And they have gone through linear algebra already. Yes, sir. I don't see, I mean, this is just, I mean, do this and stuff. ठीक है ठीक जब मैं सॉल्व करता हूँ, मैं रो एक्लन मैं फॉर्म ठीक है। लिख के सॉल्व कर देता हूँ। है ठीक है Let me write a रो एक्लन फॉर्म और उसके बाद मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ इस फॉर्म में आता है। ठीक है जी? Let me write a रो एक्लन फॉर्म। Okay, so 2 3 4 9 0 0 1 3 2 0 0 0 minus 1 4 0। Let's say कि मैं PC is equal to 0 को सॉल्व करने गया, मैंने मैट्रिक्स बनाया, राइट हैंड साइड 0 आई, मैंने सारी रो एक्लन फॉर्म बना ली, ये दिस इज द रिजल्ट। यस अब मैंने रिजल्ट को लिखना है, समझ आ रही? Okay, so how to write the result? First of all, pick the last equation. We have minus x3 plus 4x4 is equal to 0. If x4 is equal to t, then x3 is equal to 4 here. Yes? अब x4 और x3 की वैल्यू इसमें प्लग इन करते हैं, and let's see, x2 plus 3x3 which is 4t plus 2x4 which is t is equal to 0, and that gives me x2 साथ ही टी की वैल्यू पुट ना कर दे, sorry, टी की कोई वैल्यू पुट ना कर दे। बाद में करते हैं, ठीक है just to see कि there are infinity values. हाँ ठीक 14? Yes. Now plug in this x1, x2 and x3 in here and you will get your x1. Yes. So let's see. 2x1 plus 3 times minus 14t plus 4 times 4t plus 9 times t is equal to 0. So what is that? x1 is equal to what? So 42t 16 उसमें से निकाल दे, 42 में से 16 निकाल, 16 बोलते 16 और 9 25, 42 में से 25 निकाले यार 17, this is minus 17 तो इधर आगे 17 हो जाएगा, so this is 17 over 2t. Yes? Make sense? अब मैं इसका solution लिखने जा रहा हूँ, ये solution ये है, solution is 17 over 2t, then we have minus 14t, then we have 40, Yes. 40, then we have t. Now just section out this t and you will get 1 here and t here. That's the solution. Make sense? अब t की कोई भी वैल्यू ले ले, t की वैल्यू ले ले, let's say t की वैल्यू 2 ले ले, just 1 ले ले, 2 ले ले, t की वैल्यू 1 ले ले for example.
अगर t की वैल्यू 1 ले लें that's the camera center. Yes. If you take value of t as 1, this is the camera center. Yes, no. अगर t की वैल्यू 20 ले लें तो फिर 20 से डिवाइड कर दें. हाँ आखिर. सही है? Yes. Yes, no. उसको नाम मशीनरी सेट करेंगे तो वो वही पॉइंट. Sorry? अगर t की कोई जो भी वैल्यू ले, that's the whole point. जो मर्जी वैल्यू ले, you will end up having center. चलें आगे? Okay, great. One quick application of, we have seen a lot of algebra and a lot of these kind of things. Where are they applied? Let me show you one quick application of it. Although we will explain this 3D reconstruction in detail in this course, but here is a quick overview, a quick glance how 3D reconstruction can happen. Clear? So that's it. सेटअप में आपको बता देता हूँ. फर्ज करें आपके पास दो कैमरे, कैमरा 1 एंड कैमरा 2, और आप अपने कमरे में आपने एक रूम के अंदर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स किया हुआ है. सही है? उस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से कोई एक 3D में पॉइंट है जिसको आपने मेजर किया हुआ है. मेक सेंस? वो 3D पॉइंट यहाँ पे फिलहाल ये है, जिसको किसी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ कोई वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके लिहाज से ये पॉइंट नहीं हुआ. सही है? ये कैमरा 1 आपने लगाया हुआ, ये कैमरा 2 फिलहाल यहाँ पे मैं वर्चुअल प्लेन शो कर रहा हूँ. सही है जी? कि सेंटर से आगे है प्लेन, नॉर्मली पीछे होता है. दैट्स अ वर्चुअल प्लेन जो आप फोकल लेंथ जितना पीछे होता है उतना आगे शो कर देते हैं. जस्ट क्लियर? अब सेटअप ये है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब आप दो कैमरे लेके आए, जो आपने पहला कैमरा आप लेके आए, उससे आप जब उसकी जो भी आपने सेटिंग करनी थी वो की, उसको सेट किया, उसकी जो भी आगे पीछे रोटेट करके जो भी, you do all your settings whatever you like, you fix them and then you fix that camera on the tripod like that. सही है? जब कैमरा आपने फिक्स कर लिया, ठीक है, तो आपने आंखें बंद की और आपने ऐसे किया और फिर आपने ऐसे करके देखा तो उसके ऊपर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ आ रहा था, which is the camera matrix, जो इस वक्त इसकी सेटिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है. सही है? ये जो प्रोसेस है ये अगली स्लाइड में है कि आपने कैसे करना है, हाउ टू एस्टिमेट कैमरा. सही है? पर आई एम अज्यूमिंग राइट नाउ कैमरा मैट्रिक्स इज गिवन. सही है? फिर आप दूसरे कैमरे पे गए और दूसरे कैमरे की जो भी आपने सेटिंग्स करनी थी, डन विद दैट सेटिंग, एंड देन जस्ट अ कैमरा मैट्रिक्स अपीयर एट द एलईडी ऑफ द कैमरा. लेट्स से ऐसे नहीं होता है, लेट्स से now you know camera matrix 1, which is P1. You know camera matrix 2, which is P2. And you know a 3D point X in the world. समझ आ रही? वो जो 3D पॉइंट है वो आपने इंचेस टेल देके किसी तरीके से अपनी वर्ल्ड के लिहाज से मेजर कर लिया. ये जो कैमरा मैट्रिक्स P1 है, P2 है, ये भी वर्ल्ड आपकी वर्ल्ड के लिहाज से मेजर है. याद रखें वर्ल्ड यहाँ पे इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि कैमरा की रोटेशन और पोजीशन वर्ल्ड के लिहाज से मेजर है. और फर्ज करें कि ये आपने कैमरे जब लगाए वर्ल्ड के लिहाज से मैट्रिक्स भी आपके पास आ गए और 3D लोकेशन आपके पास नहीं है. 3D लोकेशन आपके पास नहीं है. कोई एक पॉइंट है जिसको आपने इमेज करना है, वो पॉइंट की 3D लोकेशन वर्ल्ड के लिहाज से आपके पास नहीं है. सॉरी अगर मैंने पहले कह दिया. ठीक है? ऑल यू हैव इज कैमरा मैट्रिक्स 1, कैमरा मैट्रिक्स 2. ठीक है? और ये दोनों किसी एक पॉइंट को देख रहे हैं, वो पॉइंट 3D में उसके 3 कोऑर्डिनेट्स के हैं, यू डोंट नो दैट. सही है? वही निकालने हैं, वो निकालने हैं. यू वांट टू नो दोस. सही है जी? अब होता ये है कि ये कैमरा जिस भी पॉइंट को इमेज करता है, इमेज में उसके इमेज कोऑर्डिनेट्स आपको पता है. जाहिर है आपके पास इमेज है, यू कैन रीड द इमेज. मैटलैब में लिखे रीड पूरा मैट्रिक्स है, उसके इंडिसेस एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है. फर्ज करें वो पॉइंट जो है उसको नीले रंग का आपने रखा हुआ था, तो वो नीला रंग इधर किस लोकेशन पे आया, इस कैमरे में किस लोकेशन पे आया. जब आपने इमेज ली उस पॉइंट की जिसकी 3D लोकेशन आपको नहीं पता,
तो उसकी इमेज लोकेशन कैमरा 1 में भी आपको पता है, कैमरा 2 में भी पता है, क्योंकि इमेजेस आपके पास है. You can find out, I mean, you can see it's 1, 2, 3, 5,17. That's the pixel. समझ आ रही? Similarly, image 2 में भी पता है. So what I know is the following. I know x1 vector here. I know x2 vector here. समझ आ रही? कोई एक पॉइंट है 3D में, उसी पॉइंट को कैमरा 1 ने भी देखा है, उसी पॉइंट को कैमरा 2 ने भी देखा है. कैमरा 1 में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इमेज कोऑर्डिनेट्स को मुझे पता है, these are x1 vector. और x1 vector means here is this. x1 is, let's say, x1, y1, w1, and x2 here is x2, y2, w2. समझ आ रही? यस. सही है. और चूंकि मैंने ये इमेजेस से उठाए हैं, तो इमेजेस में मैं नॉर्मली इस w को 1 ही कर दूंगा. ये मुझे पता है इमेज 1 में ये पॉइंट कहाँ पे है, इमेज 2 में उसके x और y कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं. मुझे कैमरा 1 भी पता है, कैमरा 2 भी पता है. अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट के जिसकी ये दो इमेजेस हैं, इसका 3D निकालो. 3D में ये कहाँ पे है, और ये 3D में निकालना चाहता हूँ अपने वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से. What is the x, y and z coordinate of this point in 3D? Given the camera matrices are available, and the image points correspondence is available. यानी image में मुझे पता है कि ये जो point है, यही point इस image में यहाँ पे. I know the correspondence. Later on we will see कि कैमरा कैसे estimate करते हैं और ये correspondence establish कैसे करते हैं automatically. We'll see that. That's a process. वैसे बाय द वे हम ये अपनी आई का डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट? तकरीबन. हमारी आई भी 2 कैमराज हैं और वो डेप्थ फिगर आउट कर रही है Yes. कि वो एक्चुअली फिजिकली कितना है. Yes. ठीक है. Exactly. सही दूर लाइन की By approximating each eye as a pinhole camera. यस. That's an approximation. यस. Yes. सही दूर लाइन की इंटेंसिटी कम नहीं है पॉइंट पे. Yes. Hold on. Let me move on. Is that okay? Is that okay? Setup समझ में आ गया? कोई 3D में एक पॉइंट है, उसकी इमेज कैमरा 1 ने भी ली है, कैमरा 2 ने भी ली है. मुझे कैमरा 1 की मैट्रिक्स भी पता है, कैमरा 2 का मैट्रिक्स भी पता है. इमेज 1 की इमेज लोकेशन भी उस पॉइंट की पता है, इमेज 2 में उस पॉइंट की इमेज लोकेशन पता है. कैन आई फाइंड आउट कि वो 3D में कहाँ पे है? कैन आई रिकंस्ट्रक्ट दैट पॉइंट इन 3D? Where that point is in 3D? What are the 3 coordinates x, y, z with respect to the world where the point is? Question here. समझ आ गई बात की? Yes, no? Yes. Okay. So अब जो चीजें मुझे गिवन है मैं उनके लिए डब्बे ड्रॉ कर लूँगा, और जो चीज मैंने फाइंड आउट करनी है वो डब्बे के बगैर होगी. ठीक है. या इस तरह से कर लेते हैं, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके लिए डब्बा बना लेते हैं, और जो चीजें गिवन है वो डब्बे के बगैर. सही. So मैंने फाइंड आउट करना है ये. Rest of the things are available. P1 is available, X1 is available, P2 is available, X2 is available. I need to find out this. अगर आप गौर से देखें, इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या चीज है? It's a linear system. Oh, sorry. This is given, and 1. Right? That's a linear system solving. I told you how to solve this linear system. That's also a linear system. अब सवाल ये है कि 2 कैमरों की जरूरत पड़ी क्यों? समझ आ रही है? 2 कैमरों की जरूरत क्यों पड़ी? हमें linear system solve करना था, हम इसी से कर लेते. Why we need this one? ये समझ आ रही? जरा गौर से देखिएगा. अगर हमें linear system solve करना था, हम इसी से कर लेते. तो ठीक है, इसको solve करें. It has 4 variables, 3 rows. 4 variables, 3 rows. That means what? The rank is at max 3. 1 pivot is lost, which means infinitely many solutions. That's fine, that makes sense, infinitely many solutions. But the big trouble is, all those infinitely many solutions, they are not scalar multiple of each other. Because the right hand side is not 0, 0, 0.
अदरवाइज होता ये कि ये सारे के सारे उस एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? That's trouble. वो एक पॉइंट कौन सा है? Do you know? Yes, no. So what we really we can find out a lot of points. We can find out a lot of points. And by the way, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये सोल्यूशन इस फॉर्म में आएगा something 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 plus t something 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 something, and that is a line. That is a line, and that exactly is this line. समझ आ रही? अब मुझे ये नहीं पता कि इस लाइन, मुझे ये पता है कि मेरा पॉइंट इस लाइन के अलॉन्ग है, मुझे नहीं पता किधर है। ये P1 वाले कैमरा के वाली Yes, लाइन आप कर रहे हैं। yes. समझ आ रही? और अगर आप प्रिसाइजली देखना चाहें तो मैं करूँगा ये कि मैं इसमें t की कोई एक वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे कोई एक पॉइंट मिल जाएगा इस रे के अलॉन्ग ना, कोई एक पॉइंट मिल जाएगा। ये जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं t की कोई एक वैल्यू पुट करूँ तो मुझे यहाँ पे लेट से पॉइंट मिल जाए। ये पॉइंट याद रखें वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से मेजर्ड है। ये मुझे वर्ल्ड में मिला है। परिभाषा में आ रही? मैं t की कोई और वैल्यू पुट करूँगा मुझे वो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा लेट से, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिले क्योंकि एवरीथिंग इज मेजर्ड इन वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ आ रही? सो मैं करूँगा ये, मैं t की कोई एक वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। आई एम कॉलिंग दैट पॉइंट एज A1। सही है? यस नो? अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इस सिस्टम को सॉल्व किया, देयर वर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। आई फाउंड एनी वन सॉल्यूशन रैंडमली बाय असाइनिंग t सम वैल्यू एंड आई फाउंड अ पॉइंट A1। अब मैं p तो मुझे पता है, मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे कैमरे का सेंटर मिल जाएगा। p पता है ना? अब मुझे कैमरे का सेंटर भी मिल गया